ये कुछ आपको पूरा पैराग्राफ नहीं, बुलेट पॉइंट्स बनाइए अपने. According to a Forbes study, there are only 3 QSRs. कल QSR बोला था हमने. What are QSRs, Kriti? Quick service restaurants. Only 3 QSRs ranked as 1, 2 and 3 in the world. The first one has always been unbeatably McDonald's. Miss Amina. McDonald's has always been unbeatably number 1. Second is your KFC. Third is your Subway. उसके बाद तुम्हारे जितने भी Burger King and blah blah blah, all the chains. But McDonald's has undoubtedly been, since the inception of the chain itself, number 1. इसके कुछ यूनिक पॉइंट्स लिख लीजिए फॉर मैकडोनल्ड्स के लिए बुलेट पॉइंट्स बना लो, राइट डाउन. इट इज द मोस्ट विजिटेड QSR इन द वर्ल्ड. वी आर टॉकिंग इन अ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट. रिमेंबर, सारी बातें ग्लोबली होंगी मैकडोनल्ड्स को लेके. मैकडोनल्ड्स इज अ ग्लोबल QSR, मोस्ट विजिटेड. नंबर 2, burgers, all kinds of burgers are prepared within 3 minutes. 3 मिनट के अंदर कोई भी बर्गर प्रिपेयर होता है. 37,000 and counting, and still counting. 37,000 and counting outlets across the globe. We are talking globally. Serves in more than 115 countries. और मैं जैसे बोल रही हूँ शायद countries का नंबर बढ़ गया है. In more than 115 countries. बोलते बोलते countries का नंबर भी चेंज हो रहा है. Serves more than 68 million burgers every day. ग्लोबली बात हो रही है, सारे मार्केट्स मिला लिए. More than 68 million burgers are being delivered every day. Now, what are those 7 key factors which are the part of McDonald's business strategy? Strategy का मतलब समझते हैं? Have you studied the subject business strategy? Yes. Subject छोड़िए. Do you understand the meaning of the term strategy? No. long-term planning. No policies. टेक्निक क्या बात होगी? Long term. फिर तो हर एक साइंटिस्ट स्ट्रैटेजिस्ट बन जाता. स्ट्रैटेजी, यस, षड्यंत्र बनाना है, योजना. आमिना फातिमा को क्रश करना है मुझे. आई वॉन्ट टू क्रश मिस फातिमा. So let's say I'm discussing with Miss Triti. Miss Triti, क्या strategy बनाई जाए to crush Miss Fatima, who is our competitor? She's probably the CEO of KFC. We are working for McDonald's. What will be our strategy, our game plan? Business की भाषा में plan of action is a very formal term. Game plan क्या है? या फिर आपका एक्शन प्लान क्या है? एक्शन प्लान क्या होगा? टू क्रश हर. स्ट्रैटेजी. देयर इज नो टेक्निक इन दिस. वी विल यूज ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल prowess, whatever we can use in our power to crush KFC, whether it's the brand, whether it's the reputation of the brand, whether it's spreading some fake news about the brand, or reducing the pricing of our own products. इसमें टेक्निक क्या है बेटा? This is a psychological political game. लिखिए. In the world of business, please understand, it is a ruthless, cutthroat world. Yes or no? Cutthroat है कि नहीं है? If I have to crush KFC, I will use all kinds of political, psychological agendas to crush KFC. And that will also include tarnishing the brand and the reputation of KFC. Now you can replace the term KFC with anything. That's how strategies are created. Political astuteness is required. What is astuteness? Political cleverness, chalaki. Political astuteness, knowledge of psychology,
Whose psychology? Consumer's psychology. How do I crush KFC? By targeting my consumer's psychology. So what is politics? Politics is the game of getting and retaining power. How can McDonald's get this and retain this power? McDonald's will do it by using consumer psychology and political astuteness. Strategy यहाँ पे आती है. A little bit of strategy will also come in understanding how product quality can be improved, how product prices can be reduced, and how you can again use the psychology of your target audience. तो यहाँ पर लिखना शुरू करिए. First point. अभी देखिए, if you have studied MBA well because you are in your 4th semester, what is the first rule of business anywhere if you have been taught? किताबों में नहीं पढ़ाया जाता, but if you are running your own business somewhere, or if you have the mindset of an entrepreneur, what is the first and the most important rule of business anywhere? All jargons. Speed. लिख लो. The only most important rule in business is speed. That is why I said MBA is not taught in textbooks. MBA is taught by the world. दुनियादारी सिखाती है असली MBA. Speed. लिख लो बड़ा बड़ा. So the first CEO of McDonald's, उनका नाम लिख लीजिए, Mr. Ray Kroc. Mr. Ray Kroc, who was the first CEO of McDonald's, उन्होंने अपना पहला cornerstone बना दिया. He said one thing to all the employees. If you are all the first employees of McDonald's, the very first employees of McDonald's, and I am Ray Kroc, I want speed. I want speed in my business. तो Ray Kroc को क्या चाहिए था? Speedy service. लिख लीजिए. So he developed. Ray Kroc is credited with developing the strategy of systems and repeatability. लिखिए repeatability. System का मतलब जानते हो? There is a system of doing something. You come to the college, you enter the premises, you come to the class, you open the classroom door, you say, may I come in? Greet the teacher, you sit down. एक system follow किया आप लोगों ने कि नहीं किया? So he proposed the strategy of systems and repeatability. अब एक line इसके आगे लिख लीजिए, then I will explain. There can be no scalability without repeatability. Two very important terms. Frame भी check करते रहिएगा. There can be no scalability without repeatability. Repeatability के साथ एक और चीज लिख लो. Duplicability. Where does the word duplicability come from, Miss Amina? Duplicability. Duplicate movie देखी थी शाहरुख खान की. You know the meaning of the term duplicate? Yes. So duplicability comes from duplicate. So what do we mean by Miss Shivangi? Miss Shivangi, what do we mean by the statement that we've just written? There can be no scalability without repeatability and duplicability. इस statement से आप क्या समझती हैं? Because scalability क्या होती है? Let's break down the terms. Scalability क्या है? नहीं. Scalability का बस एक मतलब बता दो. Parameter again complicated answers. Simple answer. मैंने इस क्लास में एक रूल लगाया है. ऐसा जवाब दो कि 5 साल के बच्चे को समझ में आए. Yes or no? Yes. यही फॉलो कर रहे हैं हमारे क्लास में. Scalability क्या है? नहीं. No. Wrong answer. लिखिए सब लोग. Scalability यार. You have to increase the scale. Large scale यार. McDonald's में Mr. Ray Kroc ने बोला, right now we are in the United States of America. I want to be all over the globe. Scalability. I want to increase my size and scale. Scalability काम खत्म.
सिस्टम है, प्रोसेस है, इट इज अ वे. बच्चा बेचारा 5 साल का परेशान होकर बोल के चला जाएगा. योर कस्टमर इज गॉन. स्केलेबिलिटी समझ में आया मिस्टर? व्हाट्स योर नेम? Aryan. What is scalability? You have to scale it, make it big, size. और रे क्रॉक ने बोल दिया, I will not get scalability without repeatability and duplicability. तो वो repeatability किस चीज में कह रहे थे? बार बार बर्गर बनाओ, बर्गर जल्दी जल्दी बनना चाहिए, दिन में 1000 बर्गर. बेटा अगर दिन में 1000 बर्गर आप बना रही हैं तो आप अपने एक ही काम को रिपीट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? That's the way to scale. Mr. Ray Kroc said that. I did not say that. He developed this thing. Then Ray Kroc said duplicability. You're making the same burger 1000 times. Duplicate clones बना रही हो कि नहीं बना रही हो? शाहरुख खान की मूवी याद आ गई? 100 शाहरुख खान बना दिए तुमने, 100 burgers बना दिए. Ray Kroc said without duplicability and repeatability of the manufacturing of the burgers, my brand will not scale up. It will not spread across the globe. समझ में आना है हमें ना? अब जब आप मैकडॉनल्ड्स जाती हैं, बोला एक आलू टिक्की बर्गर, एक आलू टिक्की बर्गर, पीछे से अचानक से एक आलू टिक्की बर्गर आ गया, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, 10 एकदम से डिलीवर हो रहे हैं. रियली? तो क्या क्या लिखा है आपने? 2 टर्म्स क्या लिखे? स्केलेबिलिटी, डुप्लीकेबिलिटी एंड 2 टर्म्स जिनसे स्केलेबिलिटी आती है बेटा. रिपीटेबिलिटी एंड डुप्लीकेबिलिटी. समझ में आ गया? दैट वाज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी. एक सिस्टम बना दिया, एक रेसिपी तैयार हो गई. नो इंटेलिजेंट शेफ इज रिक्वायर्ड. ही सेड व्हाई शुड वी हायर एन इंटेलिजेंट शेफ? अ जूनियर शेफ कैन बी हायर्ड. उसको सिस्टम सिखाओ, रेसिपी दो, 1 दिन की ट्रेनिंग दो, कम वेजेस दो और 100 बार बनाओ. दे दिया एक रेसिपी. एनी जूनियर शेफ कैन नाउ मेक दैट बर्गर. यस और नो मिस कृति? Yes, ma'am. Do we require intelligent chefs and pay them more? No. That's what Mr. Ray Kroc did. एक रेसिपी तैयार हो गई, दिन में आप 5000 बार उसको बनाइए. सेकेंड पॉइंट नंबर 2. इज दिस पॉइंट क्लियर डार्लिंग? तन्मय, इज दिस पॉइंट क्लियर? सेकेंड, मॉडल एंड मेथड. सो मिस्टर रे क्रॉक सेड एक मॉडल बना लेते. वी विल इंट्रोड्यूस 5 बर्गर्स फॉर एग्जाम्पल. मेथड बना लेते हैं. मेथड क्या है बनाने का? सिस्टम सेट कर दिया, मशीन्स लगा दी, रेसिपी प्रिपेयर कर दी, इंग्रेडिएंट्स आ गए, द मॉडल एंड द मेथड इज रेडी. बहुत सारे मॉडल्स प्रपोज किए गए. देन द लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी वॉज यूज्ड. अगर आपने मैनेजमेंट में जूनियर क्लासेस में पढ़ा है तो देयर इज समथिंग विच इज नोन एज सिंप्लीफिकेशन. Yes, ma'am. सिंप्लीफिकेशन पढ़ा होगा, अब तुम लोग भूल चुके होंगे या तो. A lot of models and methods are created, but through the process of simplification, all the unnecessary, superfluous methods are eliminated. जिनमें या तो कॉस्ट ज्यादा होती है या फिर प्रोडक्ट बनाने में टाइम ज्यादा लगता है. एंड टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी बिकॉज रे क्रॉक वांटेड व्हाट? स्पीड. So one perfect model and method was created. Time was reduced, wages were reduced, junior chefs were hired. That model and method through the process of simplification was given to the junior chef. Now the junior chef is ready to prepare 5000 burgers. अब ऐसे 10 आ गए तो कितने बर्गर्स प्रिपेयर हो गए? 50,000 बर्गर्स. ऐसे आउटलेट्स बनते चले गए इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. थर्ड पॉइंट, वैल्यूज की बात आ गई. स्पेशल होलिस्टिक स्टूडेंट्स, आप लोगों से क्या बोला गया था? आई एम डिमांडिंग सम वैल्यूज फ्रॉम यू. मिस्टर रे क्रॉक से देखिए, वी विल यूज पॉलिटिकल एस्ट्यूटनेस, वी विल प्ले द पॉलिटिकल पावर गेम, वी विल ऑल्सो प्ले विद द साइकोलॉजी ऑफ द कंज्यूमर, बट वी विल स्टार्ट विद द वैल्यू सिस्टम. स्ट्रैटेजिक वैल्यूज. Strategic values. If the values are not right, then no business can be established, Mr. Aryan. Am I right or wrong? Political game तो बाद में खेला जाएगा. पहले आप तो अच्छे बनिए. पहले आपके प्रोडक्ट में दम है कि नहीं है? अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है तो आप KFC को क्या ही क्रश करोगे? Yes or no? सोचिए, कितनी भी पॉलिटिक्स लगा लीजिए और कितना भी कंज्यूमर के साइकोलॉजी के साथ आप खेल लीजिए, if your product is not good, I will still go to KFC only. So Ray Kroc said, if we have to compete with KFC, then we have to ensure that our product is really good.
सो व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी फॉर मैकडॉनल्ड्स? लिख लीजिए, अब्रीविएशन में है ये। QSCV, it's an abbreviation. These were the 4 values decided by Ray Kroc. Q is what, Miss Shivangi? सोच के बता दीजिए. Quality. The quality of my product has to be top notch. Only then I can compete with KFC and Subway. Otherwise I can't. Write down. Ray Kroc said, भाई देखो, repeatability होगी, duplicability होगी, but if 5,000 burgers are being prepared by her, they will be top notch. Same taste, same quality, same everything. Every consumer will be satisfied, and not just satisfied, will be delighted. These days, customer satisfaction is not used anymore. It's all about customer delight. Are you delighted? So Q. What is S? Service. Speed. Ray Kroc was obsessed with speed. Speedy service. Within 3 minutes तो आपको complicated burgers मिलते हैं like the Maharaja Map. Within 1 minute delivery होती है. Speedy service. What is C? You go to any outlet of McDonald's, आपको सफाई मिलेगी. You will find Cleanliness. No matter how crowded it is, whether it's a takeaway, whether it's a dine-in, don't you find for the most part that all the outlets are bustling for sure, they're busy, but they are still clean. So cleanliness. V is very simple. Value for money. McDonald's is known for meals under 100 rupees. Value for money. The Indian consumer is happy, considering the Indian economy. So these were the strategic values set by McDonald's, and these were set across the globe. आप इंडिया में खा लीजिए, आप यूके में खा लीजिए, आप ग्रीस में खा लीजिए, you will find all these. Next bullet point. Very important. Internal marketing plan. Internal marketing plan. अभी रे क्रॉक डिड नॉट से बाहर की मार्केटिंग करो, ये करो, वो करो, उसको बोलो, ये करो, कस्टमर पे. नो 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 नो. पहले अपने एम्प्लॉइज को हैप्पी करो. मेक योर एम्प्लॉइज हैप्पी. सी इफ शी इज अ जूनियर शेफ, how much will I pay her in India? Not more than 15 or 20,000 rupees per month. But she's still happy. She's still working for McDonald's. If she quits McDonald's, and like her, everybody quits McDonald's, how did McDonald's become so big? After paying every employee not more than 20,000 rupees, employees are still happy with those wages. Why? Internal marketing plan. अब ये लोग क्या करते हैं? They keep their employees very happy. All free meals for you, for example, and your family. Incentives, bonuses, rewards. I will educate you. I will train you very well. बाद में इनको empowerment workshops में भी लेके जाता हूँ. Ray Kroc, अगर educate, train, empower. There is trust in the employee. There are bonuses, rewards, and incentives for the employee. Internal marketing plan. Then they said, abhi bhai, employee needs to be happy. Mr. Aryan, I have a question for you. If my employee is not happy, will my employee make the consumer happy? Bhai, there are consumer yahan se, frustrated employee does not even greet me properly. The same thing which I taught you. Greet तो आपने किया नहीं. अगली बार मैं आऊंगी नहीं आपकी दुकान पे. She greets me very well. चाहे वो बर्गर गंदा है, लेकिन मैं अपनी फैमिली को लेके वही हूँ. I will. That is why so much of emphasis on manners and etiquette. लेकिन वो manners and etiquette आते कहाँ से हैं? पहले से एम्प्लॉय भाई वहाँ कल्चर बनाया जाता है.
सो ही सेड इंटरनल मार्केटिंग प्लान बनाइए पहले, एक्सटर्नल मार्केटिंग बाद में देखी जाएगी। एम्प्लॉइज को बुलाते हैं, अब वो क्या करते हैं, ये कैसे सीखती है ये सब ग्रीट ट्रीट करना, शी इज एजुकेटेड, लिखिए these are the points which he did. Education is given, training is given, she is empowered. Miss Niharika, this is how you are supposed to behave with the consumer. When they come, hello ma'am, hello sir, how are you doing little kid, what can I do for you today, hey what would you like this toy as well. Mrs. Niharika is always smiley and cheery, consumers are happy. Then when she's doing so well, she's performing so well, she's behaving so well, I will reward her. I will not increase her wages, but what will I say? 2 trips by your family on us, absolutely for free. Birthdays, all family birthdays on us. For you, everything is for free. You come to work every day, all of your meals are free. Please eat with us. You are a part of our family. हम भी आपको फिर खुश रखते हैं अगर आप हमारे एजुकेशन और ट्रेनिंग को अच्छे से एम्बॉडी करते हैं और यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेन्यू इनोवेशन। मेन्यू इनोवेशन वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, उससे आप समझ जाओगे। हैव यू सीन मोस्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ मैकडॉनल्ड्स? एडवर्टाइजमेंट्स देखे बेटा, आपका नाम क्या है? रिया। इन मोस्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट्स विच कंज्यूमर इज हाईलाइटेड द मोस्ट इनके एडवर्ट्स में जो टीवी पे चलते हैं? Absolutely. भाई ये सच में सबकी दुकान बंद करेगी। Kids, the child is always highlighted. पापा मुझे मैकडॉनल्ड्स जाना है। पापा भी क्या सोचते हैं, ठीक है बच्चा जिद कर रहा है मैकडॉनल्ड्स चलो, सस्ता भी है, पूरी फैमिली की आउटिंग हो जाएगी। So what did McDonald's realize? McDonald's closely observes their key targets. बच्चे ज्यादा आ रहे हैं ना, बच्चों के ऊपर एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे, बच्चों की साइकोलॉजी के साथ खेलना। Playing with the psychology of kids. How? Toys were introduced. With every meal, this toy will be given. एक खिलौना देते हैं, बच्चे क्या बोलते हैं, मैकडॉनल्ड्स जाने वहाँ पे टॉय मिलता है। पापा लोग कहते हैं हाँ सस्ता भी है, सब खुश हो जाएंगे, पूरे फैमिली को ले चलो, सब लोग चलते हैं एक साथ। Now everyone is buying, everyone is eating, revenue is going up, cash flow is happening, child is happy। बच्चे को एक सस्ता सा टॉय पकड़ा दिया, बच्चे की साइकोलॉजी को मैनिपुलेट कर दिया। The बच्चा is happy, the whole family is happy. यहां पर सोशल फैक्टर्स, सोशियो कल्चरल बोला था कल, कल्चरल फैक्टर, ऑल फैमिलीज आर अबाउट बच्चास। शादी होते ही बच्चे का, children are always the focus of every Indian family. Yes or no, Miss Amina? If the child is happy, the whole family is happy. McDonald's targeted human psychology. अभी हम इंडिया की बात कर रहे हैं, we are talking about the Indian market. The same strategy will not be used for the US or the UK markets or the Greece markets. But in India, this really works. So, kids are the focus of every McDonald's advertisement. It's working very well for them. एक बच्चे के बहाने पूरी फैमिली आ जाती है और फ्लो अच्छा है। Now, menu innovation, what did they do? When they discovered that the bachas like particular kinds of menus, they introduced the Happy Meals. The Happy Meals came out of an inspiration. The inspiration were children. The toys also came out of that. Meals under 100 came out of that. Inspiration were kids again. And one more thing McDonald's did. I travel a lot, तो मैं अपने personal experience से बोल सकती हूँ। When I travel a lot, I have a lot of hotel bookings. When I go to the restaurant, if you go and stay at a 5-star hotel, they have their own restaurants and their lounges. So I go to the restaurants and I have this habit. मैं दिमाग से बड़ी curious हूँ. So I will ask, यहाँ पर signature dish क्या है? For example, what's the signature dish? What sells the most? The common most boring answer is सब कुछ यहाँ पे बिकता है. Everything is good over here. McDonald's said no. We will have, लिख लीजिए bullet points. We will have limited variety. 5 or 6 signature burgers only, depending on that local market. इंडिया में कुछ और, ग्रीस में कुछ और, यूएस में कुछ और. 5 to 6 burger varieties, limited varieties. We will make them our signature.
they will sell the most of the revenue will come from them. We will not introduce 100 different kinds of burgers. You must have noticed one thing. Depending on even the city inside India, when you go to a McDonald's outlet in Lucknow, you find a particular kind of a menu. You go to Delhi, the menu slightly changes. You go to Chennai, the menu changes. You will find some add-ons or you will find some subtractions. Delhi में आपको कुछ ज़्यादा items मिल जाएंगे. Why? It's a metropolitan. Many people are coming. Bombay again, the menu changes depending on the tastes. Even within the country, the local tastes are changing from state to state because India has got such a rich culture. South का taste कुछ और है, North का कुछ और है, कोलकाता में कुछ और है, Bombay में कुछ और है. So they are catering like that. Bombay, they realized families are liking only a particular set of burgers. Let's stick to that. अभी South में tastes are changing, so we will stick to something else. That's how they operate. Limited varieties only. One last point. ये शायद आपको जान के थोड़ा सा या फिर आपको पहले से पता हो. The term fast food was coined by McDonald's. We did not do it. We are using it for a long time, but McDonald's strategically, deliberately का मतलब जानते हो? जानबूझ के McDonald's ने fast food introduce किया है. Fast food chain. The term QSR came out of the fast food culture, quick service restaurants. But fast food, the phrase was coined by McDonald's. They made everything fast. Again, Ray Kroc's obsession with speedy delivery. Mera customer, Ray Kroc said, how dare my customer wait for 5 minutes? Mera customer 5 minutes wait kar raha hai, how dare you? That was his philosophy, that was his attitude. He used to fire his employees like that. 5 मिनट कोई वेट कैसे कर सकता है? 3 minutes is the upper cap. उसके नीचे काम करना है आपको. So, what did we do? Fast food. We are fast. If you come to us, we guarantee you fast delivery. 2 मिनट के अंदर आपको आपका सामान मिल जाएगा. The consumers became happy. For the first time, deliveries became fast in the world, and McDonald's monopolized the QSR market. These are the points which you have noted. Thank you so much.